I am in the office of the Rector Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering, Science and Technology, and I'm going to interview Fazal Ahmed Khalid Saab. Khalid Saab, how are you? Thank you very much, sir. Welcome. Assalamu alaikum. Khalid Saab, happy to see you. And in fact, we have long association when we were in VC club. आप मैं BZU का VC था, and you were VC of University of Engineering and Technology, Lahore. Dr. Saab had been Vice Chancellor, as I mentioned, University of Engineering Technology, Lahore, the oldest, and Chairman Punjab Higher Education Commission. और डॉक्टर साहब आप कोई चाइनीज यूनिवर्सिटी के भी थे, मैं नाम भूल गया कोई. पंजाब टेंजन यूनिवर्सिटी. डॉक्टर साहब, हाउ इज लाइफ? Thank you very much, Dr. Kundi, and great honor to welcome you. The GIKI Institute is celebrating this year 30 years of academic excellence. Yeah. It started in 1993 with the first batch of 120 students, and now we have about 7,000 graduates in the last 30 years who are part of our alumni association, and our current enrollment is 2,500. It's a residential campus with multiple programs and a deep tech institute with emphasis on engineering, technology and management science. And Dr. Saab, कुछ अपने बारे में मेरे viewers को बताएं. I know you are PhD, Oxford है, PhD from Oxford, and studied in Leeds. तो माशाल्लाह well educated. कोई अपने बारे में Thank you very much. I had the opportunity, and it's great honor for me to recognize and give full importance to three institutions who played a very important part in my life. UET, my alma mater, University of Engineering and Technology, Lahore, and then University of Oxford, where I completed my PhD. And also I stayed for postdoc, part of the Ministry of Defense research project for 2 years in University of Oxford and 1 year at Leeds. And then in the last 25 plus years, I've been serving at the GIK Institute, and it's really great honor and privilege for me now to head this institution. And in the last 2 years at this position, we have been able to bring a lot of changes in our curriculum, in our labs, and making it one of the best seat of excellence as far as the academic and research programs in the country are concerned. And as I recall, you had been pro-rector here, क्योंकि जब went together, we traveled to different universities, evaluation committee थी, और मुझे आपकी एक बात याद है, probably you hail from Kasur, am I right? Yes. क्योंकि आपने कहा था कसूर की बर्फी जो है मशहूर है. ये अब बात तो पुरानी हो गई. It was 2011 में हमने ट्रेवल किया, तो वेरी गुड. डॉक्टर साहब, आप चेयरमैन थे पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के, एंड देन यू लेफ्ट केम हियर. वो भी एक बड़ी प्रेस्टिजियस, तो वर यू नॉट हैप्पी देयर या? No, I think it was really great honor for me to serve the University of Engineering and Technology as Vice Chancellor. And then later on, I had the opportunity to be selected and appointed as the Chairman Punjab Higher Education Commission. And I served there for the 2 years. And that was very difficult time of COVID. And at that time, we really made a lot of changes and new initiatives. Punjab Research Fund, online training, when at that time in 19 people had hardly any understanding of Zoom meetings and Zoom connectivity and MS Team and many other online software. And as a result of that, there was the initial time where PHEC was in a position to strengthen its training program, particularly for colleges which have been neglected in the past, and then the university teachers. And let me add that in the 2 years during my tenure as chairman PHEC, I've been able to bring a lot of changes in the policy documents, also
the support of the Commission and Higher Education Department, and also on IT. And about 8,000 teachers from colleges and universities were trained online. And I think we have to adopt technology to bring maximum reach to the training and opportunities. And I remember, Dr. Saab, you kept me on very important committee for the selection of post-doc candidates. Yeah. आपके बाद शायद मुनीर आया नहीं, took me out. मैंने भी न पूछा. रात गई, बात गई. Thank you for your contribution. And that was one of the very important initiative that PHEC has been providing support to the faculty members of colleges and universities in Punjab. Dr. Saab, you as an engineer, you are engineer doctor. You also played very important role. Award भी आपको मिला. एक तो आपको 17 इम्तियाज मिला award, और वो इंग्लिश में कहते हैं it's better to deserve medals without having them and very sad to have them without deserving. लेकिन you deserve. आपको एक अवार्ड पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने दिया था, I remember. तो मेरा भी एक सवाल आपसे ये है कि पहला दो सवाल हैं इन हैंड इन ग्लोव रिलेशनशिप स्टाइल. पहला ये डॉक्टर साहब, इन ब्रीफ, हाउ वी कैन इम्प्रूव ये हायर एजुकेशन जो अब है इस वक्त. इतनी यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, बन गई हैं, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, HEC, हम उस स्टैंडर्ड पे हैं जो होना चाहिए. I think it's a very challenging, I would say, environment in modern times, and the only way for any country to progress is with the focus on education and quality of education, and particularly higher education. And from that perspective, the Higher Education Commission and Provincial Higher Education Commission and the departments and the university leadership, they all are the important stakeholders to provide quality education to the youth of this country. And unless we have all those initiatives and plans in place, probably these things are there. But let me say that with the expansion of many universities, now it's about 260 in Pakistan, in public and private sector, I think there are a lot of good things which are happening, and it's always room for improvement and opportunities. In the Pakistan Engineering Council, I was elected as Vice Chairman Punjab, and before that I've been involved in the curriculum review committees, training program. और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर टू असेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. और इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल शायद वाहिद फोरम है और एक्रेडिटेशन बॉडी है जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अदर रेगुलेटर्स एंड सम ऑफ द एलिमेंट्स विच हैव नॉट बीन रिसेंटली इंक्लूडेड in the undergraduate policy of Higher Education Commission, and also in the graduate policy which has been formulated last year. And उसके अंदर ये है कि I mean you focus more on the graduate entry. खालिद साहब, मेरा एक सवाल ये है, मैं भी 2 times VC रहा हूँ, HEC में रहा, आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के VC रहे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और अब प्राइवेट है जिक, तो क्या फर्क है एज ए रेक्टर VC प्राइवेट एंड पब्लिक? ये दोनों को मेरे मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं. अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को देखें जो कि अब 60% है, 40% हमारे जो हायर एजुकेशन कमीशन का जो कंट्रीब्यूशन है कमिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में आई थिंक we need to have restructuring, or in the previous tenure as chairman PHEC we have been working on various initiatives for reforms and restructuring of the governance model of the universities. And unless you bring the changes in the governance model, for example, you have to define the role of Senate, syndicate, and also the other statutory bodies, and then also provide them the autonomy so that they can really not only deliver in quality of education, but also on the fundraising and the new initiatives like startups, ORIX, and quality assurance, which
खालिद साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बड़ा मसला, बड़ा प्रॉब्लम क्या है पब्लिक यूनिवर्सिटियों का? जो मेरे लिए अननेसेसरी इंटरप्शन जो है कमिंग फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, और उसमें ख़ास तौर पे जो वाइस चांसलर और सिंडिकेट और सेनेट का जो रोल है उसको एनहांस करना पड़ेगा, ताकि एक विजन जो यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट की है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांसलेट इनटू मिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। एंड प्राइवेट जी, प्राइवेट के अंदर देखें आप, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर डूइंग वेरी वेल एंड ऑल्सो रिकग्नाइज, जैसे हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। बट लेट मी से देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स। इस वक्त कोई 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं विच आर reflected in the ranking, international ranking of universities। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, हमें उनको देखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है जब हम एनरोलमेंट की बात करते हैं तो फिर क्वालिटी एक्चुअली हैज़ टू बी इंश्योर्ड। सबसे बड़ा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो दोनों के अंदर वो है फैकल्टी डेवलपमेंट, देयर ट्रेनिंग एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर and focus on quality and implementation of the curriculum which is needed for all programs offered in higher education. And human resource. And human resource of course is very important and we. खालिद साहब, बस एक बात है, आप मुझसे इतने छोटे नहीं हैं लेकिन आपने अपने आप को वेल मेंटेन रखा है, एंड हमेशा आप अपने सोबर कैरेक्टर में रहे, वरना आजकल तो अगर आप ज्यादा स्मार्ट लेक्चर हैं या जेंडर हरासमेंट में भी आ सकते हैं आजकल, ये एक और अजाब शुरू है। बट एनी हाउ, ऑन लाइट साइड, सर आखिर में आप यंग जनरेशन को, मेल फीमेल, इनको क्या एडवाइस करेंगे? आई थिंक हमारी यूथ में बहुत टैलेंट है और ठीक है, हमारे मसाइल हैं इस वक्त इकोनॉमी के, पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू ए रफ पैच, लेकिन जब हम क्लासरूम्स में और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को देखते हैं और उनके टैलेंट को और उनके जो ब्रिलियंट आउटकम्स हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, कॉम्पिटिशंस, उसको सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि हमारे स्टूडेंट्स को फोकस रहना चाहिए। दे हैव टू हैव देयर विजन, ड्रीम शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू विजन सो दैट दे कैन रियली परस्यू देयर एफर्ट्स in higher education and to serve their family, their relatives, and also the society and the mankind at large. Thank you, Khalid Saab. Thank you, Khalid Saab. I appreciate and rejoice to see you after a long time. Inshallah, we will be in touch. Allah bless you. Thank you, Dr. Saab.